Hello friends. Okay, we will start now the fourth question of exercise 4.2 of simple equations. It is also very important. Okay, same as like that of the last sums we did. Okay, so here look, solve the following equations. Here this is just they told you to solve. Okay, now even though we are now here the step is not asked. Okay, then also we will do according to the steps only. Okay, now here first one look, here it is 10p is equal to 100. Okay, now here into, so what you have to do, divide. Okay, dividing 10 on both the sides. Okay, therefore what it will become? It will become 10p upon 10 is equal to 100 upon 10. Correct? Now 10 cancel, here the 0 and 1 0 cancel, so it will become therefore p is equal to 10. Okay, this is actually the steps, with the steps we are doing. Okay, while we are doing simply, okay, that is normally in case what you have to do is 10p is equal to 100. Okay, therefore, okay, now you have to understand that here into when going to the other side it will become divided, so 100 upon 10, समझे, so that it is equal to 10. एक्चुअली देखो अपन को आगे चलते ऐसा ही करना है, स्टेप सब स्टेप ऐसा नहीं लिखना है. देखो आपको सिंपली आपको इतना ही करना है. ओके, दिस इज द प्रॉपर मतलब स्टेप्स है, मगर विथ स्टेप्स करना है तो आपको ऐसा करना है. समझे कि नहीं? ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए, क्योंकि आगे चलते आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा. ठीक है, कर लीजिए. Okay, then the next one. Okay, the next one is 10p. Okay, b. Okay, 10p plus 10 is equal to 100. Okay, now इधर देखो क्या है, प्लस 100 है, तो फर्स्ट यू विल सब्ट्रैक्ट. ओके, सब्ट्रैक्ट 10 on both the sides. बराबर, therefore it will become 10p plus 10 minus 10 is equal to 100 minus 10. Correct? Now here 10 minus 10 plus 10 cancel, so 10p is equal to 90 because 100 minus 10. So abhi dividing 10 on both the side. Okay, abhi 10p का वजह से इधर है, so that it is of 10p upon 10 is equal to 90 upon 10. बराबर, 10 कैंसल, 0 इधर, so that p is equal to 9. समझ में आया? देखो अभी नॉर्मली अपन कैसा करेंगे, वेरी सिंपल वे. ओके, दैट इज ऑफ 10p. ओके, प्लस 10 इज इक्वल टू 100. ठीक है, अभी ये प्लस 10 ओ बाजू जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, सो 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10. देखा, सिंपल स्टेप्स में आपको इससे किया तो 10 हो, सो दैट अभी वापस क्या लिखेगा, देयरफॉर 10p इज इक्वल टू 90. ठीक है, सो दैट p इज इक्वल टू, अभी देखो इनटू 10 हो बाजू जाएगा तो डिवाइड होएगा, दैट इज 90 अपॉन 10. ओके, सो दैट p इज इक्वल टू क्या है, 9. बस इतना ही है. देखो ये स्टेप्स जो है अपना जो सिंपल स्टेप्स है, समझा क्या नहीं? तो हियर स्टेप्स आर नॉट देयर. नाउ हियर हाउ इट इज डन, वो स्टेप्स भी है. तो अभी करने के टाइम ऐसा करना. ओके, ये साइड में आप लोग कर ले, दैट इज दिस इज द वे टू डू. ओके, आपको जो जनरली अपन जो करने वक्त, ठीक है. सो अभी स्टेप वाइज अब करने का टाइम ये यूज करना है. ठीक है, डू फर्स्ट, देन द नेक्स्ट वन. नाउ हियर इट इज ऑफ p upon 4 is equal to 5. Now divided by, so therefore what you will get, multiply. Okay, multiply. Okay, 4 on both the sides. Okay, so what you will get, p upon 4 into 4 is equal to 5 into 4. Correct? 4 cancel, so p is equal to, what is 5 4 sir, 20. ओके, देखा अभी ये तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं. 4 इज इक्वल टू 5, तो इसको क्या है, इधर डिवाइड उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा. करेक्ट? सो p इज इक्वल टू डायरेक्टली 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20. ये डायरेक्ट स्टेप्स है, ये विथ स्टेप्स है, ये विदाउट मतलब विदाउट स्टेप्स, डायरेक्ट मेथड. ठीक है, डू फर्स्ट. ओके, तो नेक्स्ट वन भी तो सेम है.
Okay, that is of P upon 3. Here it is okay, here D, okay, that is of P upon 3 is equal to क्या है 5 है, तो इधर क्या है मल्टीप्लाइंग 3 on both sides. Okay, therefore P upon 3 into 3 is equal to 5 into 3, correct? So 3 cancels, so P is equal to 5 3s are 50, बराबर? Okay, तो अभी डायरेक्ट करने के लिए आपको समझ आ जाएगा P upon 3 is equal to 5. Okay, P को 3 को उधर लेके जाएगा तो डिवाइडेड बाई 3 उधर जाएगा तो into 3, बराबर है? So is equal to 50. Okay, कर लो. Okay, तो next one. Here it is 3p upon 4 is equal to क्या है 6. तो इधर फर्स्ट डिवाइड है तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, दैट इज मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड्स, बराबर है? देयरफॉर 3p upon 4 into 4 is equal to 6 into 4, correct? So 4 cancel. Okay, so that is 3p is equal to 24. Okay, now dividing 3 on both sides. Okay, therefore what it become? It become 3p upon 3 is equal to 24 upon 3. 3 cancel, so that p is equal to, now 324 cancelled is 8. So p is equal to 8. Direct method also you can do. That is 4 when going to other side. Okay, that is you have to understand that. Okay, fine. We'll move to the other. Yes. Okay, so here it is of F1, correct? Yeah, that is of 3s is equal to minus 9. Now it is minus 9. Look, but here this is what you have to consider. So what you have to do is divide, you have to consider, because it is into here. Okay, dividing, okay, 3 on both sides. Therefore 3s upon 3 is equal to minus 9 upon 3. Okay, 3 cancel, here 3s are 9. Okay, so that s is equal to, now this minus must be there. Okay, minus 3, so that is very important here. Okay, minus sign must be there. Sure? Don't copy. Okay, you do yourself. You must understand from it. Okay, then do yourself. Then you check whether it is correct. So you can pause in between. Okay, then the next one. Here 3s, okay, plus 12 is equal to 0. Okay, so here plus 12, okay, taking to other side it will become minus. That is you have to understand. So but doing the step, what you will do, you will do subtracting. No, sorry, here not adding. Okay, here this is plus, so that you have to subtract. Subtracting 12 on both sides. Therefore 3s plus 12 minus 12 is equal to 0 minus 12. Okay, 12 minus 12 plus 12 cancel, so 3s is equal to minus 12. 0 minus 12 is minus 12. Here the sign is very important. Now dividing 3 on both the side, because okay, here into is there. Okay, dividing 3 on both sides. Okay, so 3s upon 3 is equal to minus 12 upon 3. Okay, sure. So s is equal to minus 3 upon 12 is minus 4. Sure? Getting? Yeah, next one. So here it is of 3s is equal to 0. Which one? H1. Okay, 3s is equal to 0. So here also dividing
3 on both sides. Therefore 3s upon 3 is equal to 0 upon 3. 3 3 cancel, yes. Now 3 upon 0, sorry, 0 upon any number is 0 only. So therefore s is equal to 0. Okay. Same thing, directly also you can, so s is equal to 0 upon 3 is 0. Sure? Okay, then we will go to the other one. Here it is 2q is equal to 6. So what you have to do is dividing 2 on. Now I hope you understand very well. Dividing 2 on both sides. Okay, therefore 2q upon 2 is equal to 6 upon 2. Correct? So 2 cancel. So q is equal to 3 over. Fine? Okay, तो नेक्स्ट वन देखो, पॉज करके आप लोग कर लो. ओके, नेक्स्ट इज 2q j वाला. ओके, दैट इज 2q. ओके, -6 इज इक्वल टू 0. देखो ये एक्चुअली सेम सम हो गया, तो इधर क्या करना चाहिए, एडिंग 3. -6 है तो एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स. समझ में आ रहा है आपको? सो दैट 2q -6 + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + 6. ठीक है, -6 + 6 कैंसिल हो गया. सो दैट 2q इज इक्वल टू 6. अभी तो प्रीवियस सम हो गया, देखा? तो इधर क्या करना चाहिए, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, देयरफॉर ओके 2q अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. ठीक है, सो q इज इक्वल टू, इधर 2 कैंसिल हो गया तो q बचा, 6 अपॉन इज 3. देखा, पहला सम नहीं हो गया, लाइक दिस. कर लीजिए. ठीक है, तो सेकंड लास्ट सम. हियर इट इज 2q only it is, yeah, 2q plus 6 is equal to 0. Now it is plus 6. Plus 6 means you have to subtract. Okay, subtract 6 on both sides. Sure? Therefore, okay, it will become 2q plus 6 minus 6 is equal to 0 minus 6. Sure? 6 cancels, so 2q is equal to -6. Here sign very important, -6. Now dividing 2 on both sides. Okay, therefore it is 2q upon 2 is equal to -6 upon 2. Okay, 2 cancels, so q is equal to minus. Now here it is minus, that is very important, that is q is equal to -3. Sure? Got it well? Okay, do first. Okay, we will move to the other last sum. Okay, so here it is of 2q plus 6 is equal to 12. Okay, now here what you have to do, here plus 6. Now you have to remove the plus 6. Plus 6 means you have to subtract. Okay, subtract 6 on both sides. Therefore 2q plus 6 minus 6 is equal to 12 minus 6. Sure? So plus 6 cancel, minus 6 cancel, so 2q is equal to 12 minus 6 is 6. Now the same, okay, that is of I wala sums. Okay, so dividing 2 on both sides. So this 2q upon 2 is equal to 6 upon 2. 2 cancel, so q is equal to 3. Now look here the answer is 3. Hope you understand it well. That was this exercise is about. आपको प्रैक्टिस करना है बराबर से. देखो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो ही मैथ्स आपको समझेगा. स्पेशली ये देखो, ये प्लस माइनस वाला जो सम है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है. ओके, बिना प्रैक्टिस का आपको होगा ही नहीं. सो जितना प्रैक्टिस, देखो मैथ्स का ऐसा है, जितना पेपर आप वेस्ट करेंगे प्रैक्टिस के लिए उतना आपको मैथ्स क्या होगा, समझेगा. ओके, इजी लगेगा. ठीक है, सो बाय, हैव ए नाइस डे.